कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ गाइस बढ़िया और कुछ बढ़िया ही रहना। तो गाइस आज कोई भी फ्री फायर गेम प्ले की सीरीज नहीं आने वाली है। आज गाइस हम खेलेंगे गेटिंग ओवरहीट। तो गाइस किसी बंदे ने खेला होगा, अगर किसी बंदे ने नहीं खेला होगा तो गाइस मैं इसको पहले आपकी इसकी स्टोरी बता दूँ। ये जो गंजे टकले दिख रहे हैं ना, जिनके हाथ में हथौड़ा है, क्या कहते हैं, ये गए थे इस नदी में डूब में। तो देखो इसमें इन्होंने लगा ली डुबकी। अब देखो इसमें जाके मतलब मर जाते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग मरेंगे नहीं। तो मैंने आपको खाली इंट्रो दिखाया था। तो ये गए थे, मतलब इन्हें ये खेती बाड़ी करना है तो मैं इससे थोड़े से। अब इन्हें दिख गई नदी, अब इसमें लगा ली डुबकी। अब इनकी उसमें चड्डी उतर गई। हाँ भाई चड्डी उतर गई। तो इन्होंने एक मटका पहन लिया। अभी इन्हें घर पहुंचाना है। अभी ऐसी वैसी जगह नहीं रहते, ये रहते हैं सबसे स्पेस में। तो चलो इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और ये गेम प्ले आपको पता ही होगा, अगर आपने खेला होगा तो कितना हार्ड है। और अगर नहीं खेला तो हम आपको आज खेल के दिखा देंगे यार। तो इसी बात पे गाइस वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ओ गाइस हम तो गाइस हमसे तो कोई पार नहीं हो रहा है यार ये। ओ गाइस रुको यार, मतलब हमने पहले भी खेल चुका है बहुत बार। तो गाइस चिंगारी देखो तो गाइस मेरा अभी फ़ोन लग गया था और चिंगारी कितनी तेज़ निकली थी यार, अटक गई थी। चिंगारी भी अगर आपको देखनी, अरे सच्चे इतनी दूर बैक कैसे आ गया यार। और गाइस आपका कभी ऐसे कैरेक्टर बैक आया तो मुझे प्लीज़ बताना यार। और आज की वीडियो को लाइक है आपसे 5 लाइक इस तरह गया भाई यार, हमसे तो यही पानी हो रहा है। मतलब मैंने बहुत ऊपर तक पहुंचा रखा है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, लेकिन यार अभी क्या कहते हैं, हम आपको वीडियो बनाने के लिए वो कर रहे हैं ना दूर तक, इसलिए। There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute, if you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black, if you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it, if you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazzo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. Prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method, or the correct equipment, or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened
happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle. I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. But at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. देखो गाइस ये कभी इतनी ऊपर से अभी गिरा है गाइस ये गाइस की तब भी मटकी टूटती क्या क्रैश भी नहीं होता है गेम ऐसा बना है मतलब तो गाइस प्लीज यार लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash, but only trash culture. Be games, be movies, be music, be philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on LiveLeak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten. Shit guys. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. यार दुआ करो भाई ये गेम कंप्लीट हो जाए यार बहुत कम लोगों ने करा है भाई ये मतलब करा तो बहुत सारे लोगों ने यार लेकिन बहुत मुश्किल से होता है भाई ये तो शुरू में मतलब अगर हम लोग 1-2 साल तक इसे नहीं खेलते ना यार भाई मतलब Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. यार ये मोबाइल सब ये क्या खेल रहे हैं बाबा मुझे गुस्सा आ चुका है Oof, sorry about that. Oof, sorry about that. ये क्या हो रहा है यार ये Oh, it happened again. Keep on trying, don't let it get to you. यहाँ से गिरते हैं गाइस तो फिर बैलेंस कभी नहीं जमता यार पागल चल रहा है
पहुंच गए गाइस। कहाँ अभी गाइस? ये तो ट्रेलर चल रहा है यार, समझ लो आप लोग। वो जो पेड़ पर आए थे ना शुरू में, वो समझ लो This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. मूवी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। गाइस अभी तो मैंने एक वीडियो देखा है गाइस, उसमें बहुत गाइस गंदा मतलब इतना गंदे तरीके से पार करते हैं ना यार उसको। गाइस मैंने एक वीडियो देखी, उसमें 1 मिनट 1 सेकंड में गाइस पार कर दिया। उसने गाइस ऐसे स्पीड जमा रखी थी ना यार गाइस ऐसे। देखो गाइस मैं बताता हूँ, यार से पहले गिरी जाते हैं देखो यार मैं गाइस मैं अपनी स्पीड पकड़ करूंगा गाइस ऐसे ऊपर पे Get nasty over there, boy. Going down the road feeling bad. I'm going down the road feeling bad. Going down the road feeling bad, and I ain't going to be treated this way. Oh, down in the jail on my knees. I'm down in the jail on my knees. Down in the jail on my knees, and I ain't going to be treated this way. They feed me on cornbread and cheese. They feed me on cornbread and cheese. They feed me on cornbread and cheese, and I ain't going to be treated this way. $10 shoe fits my feet. $10 shoe fits my feet. $10 shoe fits my feet, and I ain't going to be treated this way. Going where the weather suits my clothes. Going where the weather suits my clothes. Going where the weather suits my clothes, and I ain't going to be treated this way. गाइस वहीं जाते हैं यार, जैसे गिरे थे ना अभी पिछली बार, वहीं जाके गिरते यार। ओए गाइस इतना ऊपर आया हूँ क्या मैं अभी तक? नहीं, आपके सामने तो नहीं आया हूँ अभी तक, लेकिन गाइस मैं अपने ऊपर पहले आ चुका हूँ गाइस। अब देखो ये नीचे। In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? ये तो पार ही नहीं होता यार भाई, बस यहीं तक ही आया हूँ गाइस मैं। यहाँ तक नहीं, मतलब जहाँ तक मैंने आपको जाके दिखाया, इससे आगे तो गाइस मैं जा ही नहीं पाया। गाइस वो आपको सीढ़ियाँ जो दिखी थी ना, वही गाइस अगर हम लोग देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको गाइस। एक तो यार ये मतलब गाइस यहाँ पे मतलब घर वर है, लेकिन मैं घर के अंदर नहीं बैठा हूँ, बाहर बैठा हूँ यार। बस मक्खियाँ इतनी लग रही है ना यार, क्योंकि गाइस गाँव है ये, मतलब मैं पहली बार क्या है, पहली बार तो नहीं, मतलब गाँव में अभी बकरीद चल रही है, तो गाइस हम अपने घर पे अब की बार बकरे नहीं लाए थे, क्योंकि गाइस हमारा घर मतलब अब की बार जो मेरे भाई जो है वो गाइस वही मतलब साफ सफाई करते। और भाई बातों में देखो कहाँ के अटक गया यार, अगर कहीं यहाँ से गिरा तो पूरा नीचे पक्का। वो तो गाइस बच गया, मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई थी यार, इसलिए मैं भी वीडियो नहीं डाल पाया था कुछ दिनों से। मतलब जब तो मेरी हुई थी गाइस, लेकिन पहले जब मैं नहीं जा रहा था मतलब।
बस एक तो फिसलन वाला इतना रास्ता दे रखा है ना यार, और बच्चा भी वहाँ से आ रहा है। अगर मैं ऊपर चढ़ गया तो बच्चों का क्या होगा, सोचो गाइस। मतलब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं है गाइस मेरे पास तो दिखाने के लिए। कर रहा है भाई बंदा यार। ओ गाइस मैं यहीं तक आया हूँ, इससे ऊपर मैं गया नहीं हूँ यार अभी तक। गाइस ये जो सीढ़ी आप सोच रहे हो ना कि बहुत आसान है, ये गाइस आपकी गलती है सोचने की है, क्योंकि गाइस ये बहुत हार्ड सीढ़ियाँ है यार। ये गाइस फिसलती बहुत The है। soul would have no rainbow, had the eyes no tears. John Vance Cheney. गाइस जॉन बेंच ने बनाया क्या गाइस ये गेम? गाइस देखो ऐसे ढोल तो नहीं बजाए, देखो है ना गाइस, जैसे मतलब आदिवासी के समय में ऐसे ढोल बजता था, अभी भी मतलब कई गाइस अब तो गाइस सॉन्ग का टाइम आ गया है, ढोल वोल कहाँ बजते। अभी बंदा देखो यार, ये बहुत गुस्सा आ रहा है यार मुझे। बस कैरी मिनाटी सर ने भी इसको खेला हुआ है यार एक बार। अभी गाइस इसको पूरा से कर देते हैं और ऐसे जंप मारेंगे। ओरे गाइस बस थोड़ा सा रह गया यार, देखो। The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. CS? अरे गाइस ये तो CS की बात कर रहा है यार, फ्री फायर का आगे क्या यहाँ पे? अभी गाइस यहीं से चलेंगे, देखिए। I feel within me a peace above all earthly dignities, a still and quiet conscience. William Shakespeare. आप लोग सब्सक्राइब कर दो, क्या पता आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं ऊपर छोड़ दूँ। गाइस ये कभी-कभी इसके अंदर ही चल जाता है। ओरे भाई साहब गाइस ऐसे You cannot now believe that you will ever feel better, but this is not true. You're sure to be happy again, and knowing this, truly believing it, will make you less miserable now. Abraham Lincoln. गाइस इसको यहाँ ही करते हैं, ऐसे गाइस हम लोग करके देखते हैं, क्या पता पहुँच सकते हैं यार। नहीं हमें नहीं जाना यार, यहाँ से नहीं जाना। तो भाई
अब इसको क्यों